हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल बुकमार्क। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. So if you're new here, this is the fourth video of Egypt and the last video of Egypt. So we started our journey from Luxor and went all the way down to Philae. हम फिले पहुँचे और फिले में आखिरी टेम्पल देखा जहाँ पे हमने वो वीडियो वहाँ एंड किया. अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम जाने वाले हैं वो है अबू सिम्बल. So before we could head off to Abu Simbel, we thought we'll take a nice Faluka ride in Blue Nile. Now if you can see, there is a desert around the river which is very beautiful. ये Sahara desert है. So basically the biggest desert in the world, Sahara desert, starts from here, which is really cool. यही reason है कि इजिप्ट रात में बड़ा ठंडा होता है और दिन में नॉर्मल होता है. So ये इतना खूबसूरत है. So if you want, you can sit on the shore, relax and beach vibe ले सकते हैं. But it's so pretty that you actually can see Sahara desert from here. इस डेजर्ट के शोर पे कैमल्स भी होते हैं, तो अगर आप चाहो तो इस कैमल राइड ले सकते हो. दे टेक अबाउट 300 इजिप्शियन पाउंड्स इफ यू वांट टू गो. उसके बाद वी हेडेड टू दिस डैम विच इज़ वन ऑफ द फेमस डैम, जो कहते हैं कि नाइल रिवर और लेक, एक बहुत बड़ी लेक है, उसको अलग करता है. ये डैम बेसिकली सेव्ड ब्लू नाइल रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एंड इजिप्ट गेट completely flooded and destroyed. 2000 years later. So next day we headed to Abu Simbel. हमने एक फ़्लाइट ली. जाने और आने का खर्चा $350 में हुआ था. एंड ये फ़्लाइट बेरली आधे घंटे की. आप आधे घंटे की फ़्लाइट लेके आप वहाँ पहुँचते हो एंड इट डायरेक्टली रीचेस देयर. थोड़े ही बस राइड होती है एंड यू रीच टू दिस टेम्पल. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर टेम्पल वॉज मेड टू वर्शिप रामसेस II. इसे बनाया इसलिए गया था ताकि पीपल कैन वर्शिप हिम बिकॉज ही वॉज नोन फॉर फॉलोइंग हिज डेथ. एंड उसी वक्त उसने नूबिया टेरिटरी को कॉन्कर किया था. नूबिया टेरिटरी इज लाइक वेरी डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई इट वाज द हार्डेस्ट वन. सो व्हेन ही कॉन्कर्ड इट टू शो हिज पावर, दे मेड दिस पर्टिकुलर टेम्पल. ये जो 4 मूर्तियाँ जो बाहर थी जहाँ से हम एंटर किए, वो मूर्तियाँ 20 मीटर लंबी है और कहते हैं इसे बनाने में कम से कम 20 साल लगे थे. इसे एक पहाड़ के बीच से काव किया गया है एंड उसको वहाँ खड़ा किया गया है. कहते हैं ये टेम्पल जहाँ ओरिजिनली था वो वहाँ पर स्टेबल ग्राउंड पे नहीं था और कभी भी डैम के पानी की वजह से वो फ्लड हो सकता था. तो इस टेम्पल को भी वापस शिफ्ट किया गया था, लाइक द सेम टेम्पल लाइक फिले. After shifting it, they again carved and kept it the same way it was. इस टेम्पल के बीच में 4 मूर्तियाँ रखी गई है. एक है गॉड रा, गॉड आमन, रामसेस खुद की, और एक गॉड ऑफ डेथ. कहते हैं कि साल का एक दिन है फरवरी में जब सूरज उगता है तो सूरज की किरण सीधा अंदर जाती है इन 4 मूर्तियों पे एंड 3 स्टैचूज़ पे गिरती है पर एक पे नहीं. और वो जो एक स्टैचूज़ पे नहीं गिरती है उसे कहते हैं गॉड ऑफ डेथ, क्योंकि उस पर सूरज की किरण कभी नहीं लगती. विच इज़ सो अमेजिंग एंड शॉकिंग कि उस टाइम पे इतने आर्किटेक्ट तरीके से इस चीज़ को बनाना, इतने कैलकुलेशन से बनाना कि व्हेन द सन विल रेज कब किस तरफ से उगेगी और कहाँ पड़ेगी एंड किस दिन पड़ेगी और किन पे पड़ेगी. इतना ब्रिलियंट ब्रेन मैंने कभी किसी भी आर्किटेक्चर में डिफाइन होते हुए नहीं देखा जितना इधर देखा है. सो व्हेन वी वॉक इन, देयर आर फ्यू ऑफ दीज कार्विंग्स दैट आर डन. बेसिकली दैट शोज द offerings that were happening, the way the worships were done. This is all what it's written on the wall. There are 2 temples on this island. ये जो पहला टेम्पल है जहाँ जिसके अंदर हम अभी हैं, वो सबसे ही बड़ा और सबसे ही इम्पोर्टेंट माना जाता है. The second temple that they have here is called Temple of Nefertiti. कहते हैं वो क्वीन का टेम्पल है एंड वो क्वीन सबसे खूबसूरत मानी जाती थी. Most beautiful queen that they had in their time. So again the temple is right next to it. 2 सेकंड की वॉक है. 2 सेकंड की नहीं, of course it's literally 5 minutes walk when you enter. It looks like this, but both the temples are very pretty and I will 100% recommend कि अगर आप all the way असवान तक आए हो तो असवान से अबू सिम्बल तो डेफिनेटली आना. ये टेम्पल को विजिट करना 100% तुम्हारी लिस्ट में होना ही चाहिए. Generally if they are not worth it, I'll tell you, but this one I definitely feel was worth every single penny that I spent to gain. The carvings on these walls also talk about Nefertiti and her rituals and the way she was worshipped. Right outside this particular temple is beautiful lake which you can see, and you can see both the mountains next to each other. The most surprising thing is इतने बड़े बड़े मूर्ति बनाना, इतने carving करने के लिए इनके पास equipment कहाँ से आए. That's what is shocking.
अबू सिम्बल से हमने फिर वापस अजवान पहुँचे और अजवान से हमने फ़्लाइट ली और सीधा कायरो पहुँचे। कायरो में हमने डिसाइड किया कि हम ओल्ड सिटी घूमेंगे जहाँ पे सबसे खूबसूरत सुल्तान हसन मॉस्क कहा जाता है। सो वी हैड सुल्तान हसन मॉस्क एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम एंड वी थॉट वी शुड विजिट इट। This was made by one of the kings who was after the age of Ramses. जब Egyptian age चला गया, there was a time when a Muslim age started over there, and that's when this mosque was created. कैरो इन जनरल बहुत सारे डिफरेंट किंग्स से रूल किया गया था। सो जब ये मॉस्क्स बने, ये मॉस्क को उस टाइम के किंग ने बनाया गया था, इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया था। टू गेट इनटू द मॉस्क यू हैव टू वेयर अ प्लास्टिक अराउंड योर शू एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वेयरिंग डिसेंट क्लोथ्स। आपको अबाया या सर ढकने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके शूज़ पे आप वॉक नहीं कर सकते, इसलिए प्लास्टिक से कवर करना होता है। बट ये मॉस्क डेफिनेटली अपनी लिस्ट में डालिएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत है। इस मॉस्क के बाद वी हेडेड टू अनदर मॉस्क कॉल्ड अलाबास्टर मॉस्क एंड देन वी हेडेड टू द चर्च सेंट मैरीज चर्च। ये चर्च भी उतना ही पुराना है एंड इट वाज मेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने अपना रिसाइड किया था अपनी हाइडिंग के टाइम पर। Also should be one of your must visit. Then we headed to this particular museum where lots of mummies are kept, lots of artifact which was found during the diggings, architectures को मिले थे, बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें तब फाइंड आउट हुई थी तब थे वहाँ। वैली ऑफ द किंग में जो चीज़ें भी मिली थी वो यहाँ रखी गई थी। सो यू विल फाइंड ऑल दो स्टैचूज दैट वर वंस फाउंड इन पिरामिड और एनी ऑफ दोज टूम्स हियर, and this is like one place where you find everything, so it's a must go. After this place we headed to the most amazing place जहाँ जाने के लिए हर कोई वेट करेगा, that is Giza, the pyramids. इतने खूबसूरत pyramids थे. There were only 3 pyramids which are called to be the most famous pyramids. One of the wonder, and now I know why they are called wonder. They're so beautiful, so pretty. कहते हैं कि विद टाइम ये थोड़े वो हो गए, पर जब पहले आए होते इन देयर टाइम जब इन्हें बनाया गया था तो कहते हैं ऑन टॉप इट वॉज कवर्ड बाय अ लीफ ऑफ गोल्ड, सो इट वॉज प्योर गोल्ड ऑन द टॉप। सो जैसे ही सूरज की किरण गिरती थी वो पूरा शाइन करता था और ऐसे लगता था जैसे सन की रेज आ रही है। सो पिरामिड्स को बनाते वक्त भी उन्होंने सोचा था कि सन रे गिर रही हो उस तरह पिरामिड बनेगा। And they also have a lot of camel rides over there, so you can also take camels and go. Evening में यहाँ पे ही पास में they make this light show that they do and it's a very beautiful show. रात को स्पेशली जब आप ये 3 great pyramids देखने आते हैं उसकी खूबसूरती ही कुछ और है. It's something very different. It's a very basic show but it is something that you would want to see it next to pyramids. I've put on some clips when I was there, so I hope you enjoy it. And celebrated place in the world. Here on the plateau of Giza stands forever the mightiest of human achievements. No traveler, emperor, merchant or poet has trodden on these sands and not gasped in awe. The curtain of night is about to rise and disclose the stage on which the drama of a civilization took place. Those involved have been present since the dawn of history, pitched stubbornly against sand and wind. And the voice of the desert has crossed the centuries. On the far bank of the Nile. His first ray is for my face, which is turned towards him. And for 5,000 years I have seen all the suns men can remember come up in the sky. I saw the history of Egypt in its first glow as
I hope you enjoyed the clip. I haven't put the whole show because I didn't want it to destroy it for you guys, but this was just a glimpse how the show is, and then it's up to you if you want to do it or not. But I felt it was very pretty. अगर आप देख सकते हैं तो वो जो चीज़ अभी lit up है वो basically it's a temple of mummification. So before they took anyone to the pyramid to डांटने के लिए, वो पहले यहाँ लाया जाते थे, उनको यहाँ पे mummification होता था और फिर वो वहाँ ले जाया जाता था. And they say that there's so much still there to discover from pyramid which they haven't been able to discover, which is somewhere in there and they're still trying to do. So you never know, every year you go, you're gonna find something very different in there. So this is my last night in Egypt. This is where my Egypt trip ends. Overall, the Egypt trip was amazing and I loved it. I enjoyed every single bit of it. And I felt like I have seen things which I did not imagine or did not think of. So अगर आप plan कर रहे हैं तो ये आपका must visit में ज़रूर डालिएगा. Regarding the safety, I felt it was a very safe country. But we'll talk lot more about क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते in the next video when I'll talk about do's and don'ts. But this all 4 videos that I came across was only mainly to show you guys what's worth going there, क्या क्या देख सकते हो, or maybe you guys are traveling with me sort of kind of feeling. So I hope आपने enjoy किए होगे मेरे चारों के 4 videos, and I hope you had a good time knowing how Egypt looked like, and I hope you like, share and comment every single thing. So I will end the video here. I'll put some clips more on for you to see further what happened in the show. Man is an insect. Yet it was men who built these massive monuments. And the names of pharaohs whose tombs they are have crossed the ages. Their glory has defeated time.